Today we are in a house program at Namrata Mataji's house. So Mataji has requested to have Bhagavatam here also. So I am going to take a story on, just remove the echo. Echo is little too much. Just reduce the echo, please. So since Mataji has requested, we will be taking from Bhagavatam, from the 8th canto of Bhagavatam, बलि महाराज स्टोरी. वेरी नाइस इंपॉर्टेंट स्टोरी. काफ़ी कुछ सीखने लायक है इस बलि महाराज की कहानी से. जनरल सबको तो पता है, वामन देव का अवतार, भगवान आए थे छोटे से बटुक ब्राह्मण बन के और मांग के चले गए थे, और पूरे डिटेल में किसी को पता नहीं. तो भागवतम में अगर आप देखोगे 8th कैंटो में समुद्र मंथन लीला के बाद, what happened in the Samudra Manthan Leela, just a gist of it so that you get the flow of the story. Samudra Manthan Leela was the first महागठबंधन. पहला महागठबंधन हुआ था असुर और सुरों के बीच में, और समुद्र मंथन हुआ था थोड़ा सा अमृत पाने के लिए. क्यों? तभी दैत्यों के शुक्राचार्य, जो दैत्यों के आचार्य थे, गुरु थे, उनके पास एक मंत्र था, दैट वाज संजीवनी मंत्र, जिससे राक्षसों को वो जिंदा कर रहे थे. तो और इनके पास ऐसा कोई मंत्र था नहीं, तो देवताओं के पास. तो उन्होंने बोला चलो भगवान विष्णु के पास गए. विष्णु ने बोला एक काम करो, मेरा भी प्रॉब्लम है. भृगु मुनि ने मेरे वक्षस्थल पे लात मारी है, तो उस दिन से लक्ष्मी देवी चली गई है. तो आई ऑल्सो वांट टू गेट माई वाइफ बैक. एट द सेम टाइम आप लोगों को भी अमृत चाहिए ताकि आप लोग अमर हो जाओ. तो उसके लिए काम करते हैं, जॉइंटली वी विल डू समुद्र मंथन. और समुद्र मंथन लीला तो काफ़ी बड़ा है. आई एम जस्ट टेलिंग द जिस्ट ऑफ इट सो दैट वी गेट द फ्लो ऑफ बलि महाराज स्टोरी. एंड आफ्टर दैट व्हेन द समुद्र मंथन वाज डन, एंड में पॉट ऑफ नेक्टर केम आउट, जिसको भगवान ने मोहिनी अवतार लेके सभी देवताओं को पिलाया और राक्षसों को नहीं मिला. फिर युद्ध हुआ, महायुद्ध हो गया. भगवान विष्णु तो चले गए और देवताओं ने राक्षसों को खदेड़ दिया. इतना खदेड़ दिया कि बलि महाराज was killed in the battle. But again शुक्राचार्य revived him, उनको वापस बचाए और उनको वापस एनर्जी लेके आके उनको फिट कर दिया. तभी बलि महाराज इतने कृतज्ञ हो गए थे शुक्राचार्य से कि उनकी सेवा करने लगे. तो इधर से वापस बलि महाराज revival story starts. So now in the Bhagavatam, when Shukdev Goswami is explaining this to Parikshit Maharaj asked this question to Shukdev Goswami that please मुझे explain कीजिए क्यों हमारे भगवान एक वामन, एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में एक अवतार लिए थे, और क्यों उन्होंने भगवान से, अपना बलि महाराज से कुछ दान मांगा. तो डिटेल में बताइए. तो जब डिटेल में बताने लगे तब ये स्टार्ट करते हैं. सुखदेव गोस्वामी कहना शुरुआत करते हैं कि शुक्राचार्य, बिकॉज this Bali Maharaj became the disciple of Shukracharya and began to serve him with great faith, offering everything he had. उसके पास जो भी था वो उसने गुरु के पास समर्पित कर दिया. That was the first reason why Shukracharya became very happy. And from there the story turned. Being very pleased with Bali Maharaj, who desired to conquer the kingdom of Indra, engaged him in the yajna called विश्वजीत. उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया, विश्वजीत यज्ञ. और उस विश्वजीत यज्ञ में एक हवन हुआ था, उसमें से एक बड़ा सा रथ निकला. A beautiful bow came and 2 quivers मतलब what do you say, arrows रहता है ना, रैगरोक्स को रखने के लिए, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तुनीर. हाँ, तुनीर. तो तुनीर मिला, 2 तुनीर मिला, जिससे दिव्य अस्त्र शस्त्र मिले उसको, और ये सब चीज मिले. और कहते हैं घोड़े मिले येलो कलर के, जो जैसे इंद्र के पास घोड़े हैं वैसे घोड़े मिले. और उस रथ के ऊपर फ्लैग
चिन्ह, जो ध्वजा चिन्ह था, वो था शेर का। फिर प्रहलाद महाराज ने उनको एक ऐसा हार दिया जो फूल कभी नहीं मुरझाएंगे, और एंड में शुक्राचार्य ने उनको एक शंख दिया जिससे विजय ध्वनि निकलेगी। ये सब लेके जब बलि महाराज युद्ध में वापस गए तो देवताओं का हार शुरू हो गया। द देवता स्टार्टेड लूजिंग। ओके, टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी पीपल आर Hindi only will understand Hindi, majority understand English over here? How is it like? Namrata Mataji, you have to tell me. It's English is okay? Then I will be comfortable in English. So he asked, so Indra was wondering, how come suddenly Bali Maharaj has become invincible? He's got so much of power. How can we ever win Bali Maharaj? And वो ही बलि महाराज जिसको हम लोग ने मार दिया था. He had killed him. So he was wondering how we are going to win. So he went to his spiritual master. देवताओं का spiritual master कौन है? Brihaspati. So he went to Brihaspati and he asked, "Bhai, what is the reason why he has got that special thing?" That time Brihaspati tells him, "See, he has served his spiritual master so very well, so nicely, that he has got the special power of Brahma Tejas." The Brahma Tejas के वजह से उसको कोई अब हरा नहीं सकता है. He is invincible. But he tells one small secret to him. He tells, "एष विप्र बलोदर्कः संप्रति ऊर्जित विक्रमः तेसाम एव अपमानेन स अनुबोध विरक्षति." He says, ये आज इसका ही ऊर्जित विक्रमः, मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता, इतना तेज है. विप्र बलोदर्कः, विप्र मतलब ब्राह्मण, बल मतलब स्ट्रेंथ, उसको ब्राह्मण का स्ट्रेंथ मिला है बलि महाराज को, तो ही इज इनविंसिबल. बट तेसहम एव अपमानेन, जब उसी गुरु का, when he will insult his own spiritual master, along, not only he, along with his sa anubodha vinakshati, he will be lost, or he will lose, or he will perish. That is the first instruction he gives. So the first thing what the devatas have to do, they have to wait for Bali Maharaj, for शुक्राचार्य टू गेट इंसल्टेड बाय बलि महाराज. जब तक शुक्राचार्य का इंसल्ट नहीं होगा, इनका उद्धार होने वाला नहीं है. एंड ही इज हैविंग फर्म फेथ ऑन हिज स्पिरिचुअल मास्टर, सो ही इज नॉट गोइंग टू budge or insult his spiritual master. So what did Brihaspati tell them? All of you all, please go and hide yourselves. अब आपको कोई नहीं बचा सकता. प्लीज हाइड योरसेल्व्स, रन अवे, छुप जाओ. ठीक है, सब जाके छुप गए. एंड वंस दे ऑल वेंट इनटू हाइडिंग, बलि महाराज बाय फोर्स टुक ओवर द हेवनली प्लैनेट्स. एंड अब वो बन गया इंद्र, दैत्यों का इंद्र बन गया वो. एंड ही इज इन पावर. बट there is a technical hitch in this. The technical hitch is, who can become Indra? Any one of you all can become Indra, you know that? Very good. अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति ही इंद्र बन सकता है. Now he has not fulfilled the technical requirement, though by force he has taken over the heaven, that is heaven का राजा बन गया है. But to become the actual king, the technical, there are some requisites, technical requisites. तो वो requisite पूरा करना था. तो शुक्राचार्य tells him, now you start doing अश्वमेध यज्ञ. So he starts अश्वमेध यज्ञ.
and he started doing the Ashwamedha Yajna. Here, Diti was very sad, and she was wondering, now what will happen to my sons? Sorry, Aditi, sorry. Aditi was very sad, and what will happen to my children? She is the mother of all the demigods. So all the demigods are now, hiding. So कोई भी माँ, but natural, having the children in a bad shape, दुखी रहेगी, भगवान से प्रार्थना करेगी. वहां पे कश्यप मुनि अपना तपस्या करके वापस आए. He was in a trance meditation. When he came back, he saw Diti was very sad. There was no charm. घर पे इतना दिन तपस्या करके घर पे आया, but there is no freshness, positivity, कुछ भी नहीं, एकदम dull है. He was wondering what to do. What happened to my wife? He went and asked his wife, why are you sad? That time she said, see, my children are suffering. They are all enjoying, but my children are suffering. See, the Diti's children, that is the Daityas, the Asuras, they are flourishing, and my children are sad. So that is why I am also sad. That time, Kashyap Muni says one thing very nicely. He says, what type of Maya it is? In spite of having all the knowledge, still she is attached to her children. Why should one be attached so much to the children? Everyone comes with his own set of karmas. आप ज़्यादा करने से कुछ भला भी नहीं होने वाला है, बुरा भी नहीं होने वाला है. Their set of karmas, they are going to suffer. Then, when asked by Aditi to Kashyap Muni says, Upatištva Purushaham Bhagavatam Janardanaha Sarvabhut Guh Vasam Vasudevam Jagat Gurum. He says, तेरे इस मुसीबत का हल किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ वासुदेव के पास है. क्यों? Because he is Jagat Guru. So even anyone has got any problem in life, we all have got some problem other. किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा, कोई तन दुखी तो कोई धन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई ना कोई दुख तो है सबका. किसी को सब साथ में भी होता है, किसी को सब 33 बट है सबको प्रॉब्लम है. ठीक है, तन का भी है, मन का भी है, धन का भी है, तीनों है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो भागवतम सेस अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार धीर तीव्रे ने भक्ति योगे ने यजंते पुरुष परम. इसे अगर कुछ कामनाएं हैं या कुछ कामनाएं नहीं भी हैं, क्या करना चाहिए? मोक्ष की कामना है या मोक्ष की कामना भी नहीं है, सभी कंडीशंस में देयर इज ओनली वन थिंग विच इज पॉसिबल, एंड दैट इज यजंते पुरुष परम. Worship the Supreme Personality of Godhead. No, there are various things given. If one wants name, fame, he should worship Surya. If he wants a beautiful wife, he has to worship some other devata. So everywhere, some devata ka diya hai. But why go individually to every devata when you can get everything in? आजकल बैंक में भी है ना, one counter वाला है ना, क्या, one stop counter, 1 point counter, you don't have एक जगह पे चेक डालना है, one window. So there is, यहाँ पे चेक डालो, वहाँ पे कैश डालो, वो सब झंझट ही नहीं, one window. तो उसी तरह है, for all your demands or no demands, one window, and that window is of Lord Vishnu. वहाँ जाओ, सब मिल जाएगा आपको, not a problem. And he told Aditi, now you have to do Payovrata. And one of the most important aspect of Payovrata is one has to serve the Brahmanas, follow the rules and regulations very strictly, and serve the Brahmanas. And Aditi did. Very seriously, she did. So finally, Lord replied to her prayers, and finally Lord said, I know you want a son to regain what lost reputation, opulence and life again.
on heavenly planets as usual. You want to gain back all your lost things. In my opinion, the chief of the demons are now unconquerable. ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भाई the chief of the demon, that is Bali Maharaj, is unconquerable, for they are protected by by the Brahmanas, Tejas. Actually, this katha is trying to tell you how important Guru is in one's life. Guru का अगर ढंग से सेवा करें, nothing like it. That itself is big power. Every Bhagavatam, every story tells you some big understanding. If you take Amrish Maharaj story, there what happens? ब्राह्मण का इतना नहीं बताया गया है. ये बताया गया है कि वैष्णव ब्राह्मण से सुपीरियर है. पर दुर्वासा मुनि was chased by the Sudarshan Chakra. So each and every place you will learn in Bhagavatam, you learn each and every story has one importance. So let's not deviate, let's be in our topic only. So yeah. You have prayed for me, Lord said, you have prayed for me and properly worshipped me by performing the great Payovar ceremony. For the sake of protecting your son, because of Kashyap Muni's austerities, I shall agree to become your son and thus protect your sons. Please, यहाँ पे बहुत जरूर important line है जिसको आपको समझना है. गोष्ठाष्टमी मारीच तस्य अधिष्ठितः. What does this mean? मारीच का मतलब it is nothing but कश्यप का नाम. मारीच का पुत्र है कश्यप. भगवान क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा पति बहुत ही स्पिरिचुअल है और उसने भी बहुत सारे ऑस्टेरिटीज मतलब तपस्या की है. फॉर दैट रीजन आई एग्री टू बिकम योर सन. तो व्हाट डज दिस मीन? अलोन बाय वाइफ्स prayers one cannot get his entire, in a grahastha life it has to be joint. सिर्फ पत्नी करे या सिर्फ पति करे, no. Kashyap Muni was already doing all these austerities, but how come he did not get his sons winning over there? Because he is a common father for the asuras and for the suras, that is for the devatas. So how do you understand this? Please understand, for any wish to be fulfilled, for a grahastha especially, both the husband and the wife should jointly do the puja, or rather the worship of Vishnu. That's very important. So finally, she told, please accept Kashyapa as myself only. And Kashyap Muni could see that a small ansh of the Lord, something is entering inside him, and through him it went past into the womb of Aditi, and finally Aditi gave birth to Vamandev, the small short dwarf Brahmana. Please sit down. Come, please sit down. Can move a little ahead or come this side and sit. You can come this side also. So once he was born, again let's understand one thing. Lord is born in the four-handed form. Lord never takes birth in the way in which we take birth. One may say, oh, she was pregnant, Aditi was pregnant. No, the stomach may be big, the womb may be looking big, but udhar sirf hawa bhara rehta hai. Here it clearly says, Lord appeared in the four-handed form and then appeared as a two-handed Brahmana. And जैसे वो ब्राह्मण के बन के पैदा हुए, in the presence of his father and mother, he assumed the form of Vamana, the Brahmana dwarf, a brahmachari, just as a theoretical actor. At the sacred ceremony of Vaman Dev, जैसे ही ब्राह्मण पैदा होता है उसका क्या होता है? Thread ceremony, उपनयनम होता है ना, that is called as उपनयनम, that is the thread ceremony. And in the thread ceremony,
who all came? Very nicely it's mentioned. The sun god personally uttered the गायत्री मंत्र. फर्स्ट थ्रेड सेरेमनी में कान में गायत्री मंत्र कहते हैं, और यहाँ पे लॉर्ड सन गॉड हिमसेल्फ सेड द गायत्री मंत्र. बृहस्पति ऑफर्ड हिम द सेक्रेड थ्रेड. जनई जो होता है ना, वो बृहस्पति ने दिया. कश्यप मुनि ऑफर्ड हिम अ स्ट्रॉ बेल्ट. दीज आर ऑल given during at the time of Upanayanam. Mother Earth gave him a deer skin, and the demigod moon, or demigod of the moon, gave him the Brahma Dand. एक दंड दिया जाता है, लकड़े का दंड दिया जाता है. That is called the rod for the brahmachari. Mother Aditi gave him clothes for wearing the underwear. That is kopin. इसको kopin कहते हैं. And the deity presiding over the heavenly kingdom gave him the umbrella. Indradev gave him an umbrella, छोटा सा umbrella. Lord Brahma gave him a kamandalu, water pot, and the seven sages offered him kushagras. ये सब एक ब्राह्मण के पास होना चाहिए. At the time of उपनयनम ये सब दिया जाता है, और वो ये सब लेके सब जगह ब्रह्मचारी ये लेके ही घूमना चाहिए. Why deer skin? Because जहाँ पे बैठ के तपस्या करना है, then he will require a deer skin. Brahmadand, where he will have to carry the dand with him. That is very important. And Kuvera, who is Kuber? Treasurer of the Devatas. क्या दिया हुआ उनको? वामन देव को, भगवान को. वामन देव is none other god. वो क्या दिया? Begging bowl. Begging bowl. Yes, that's important for a Brahmana. He has to always say, Om Bhavati Bhikshandehi. He has to beg for alms. There is no shame in it. And again I tell you, Shastra clearly says, a Brahmana or a sadhu doesn't come to your house to beg. He is not interested. He is self-satisfied. He doesn't want paneer, pizza, momos, and Chinese and all that. He is not interested in all that. He is only asking so that when he comes to your house gets purified. That is why the reason is Brahmanas and sadhus should come to one's house. That is the purpose. So Kuber gave him the begging pot for begging, and Mother Bhagavati, she gave him the first Annadan. That is why she is called as Annapurneshwari. Why she is called as Annapurneshwari? क्योंकि उन्होंने बलि महाराज को पहला जो दान देते हैं ना, पहला अन्न का दान उन्होंने दिया. और बलि महाराज अपना वामन देव यज्ञ करने बैठ गए, और इधर वहां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं बलि महाराज. तो जैसे उनको पता चला, आहा वाह, ब्राह्मण तो हमेशा ढूंढते रहते ना कहाँ पे यज्ञ हो रहा है, तो वहां जाके कुछ मिलेगा उसको. एंड पहले जमाने में राजा महाराजा बड़े प्रेम से बुलाकर बड़े नाइस कोड 500. दैट्स टेक्नोलॉजी. ओके. O son of the Brahmana, it appears that you have come to ask me something. Yad yad vacho vachasi tat प्रतीच्छ में त्वाम अर्थिनाम विप्र सुतान अनुतर्कये. गाम कश्चनम गुणवत् धाम मृष्टम तथा अन्नम पेयम उत वा विप्रकन्याम गामाम समृद्धम तुरगण गज वा रथम तथा अथम संप्रति इच्छथा. व्हाट डज दिस मीन? बलि महाराज कह रहे हैं वामन देव को, क्या चाहिए आपको? घर चाहिए, अन्न पेयम खाने के लिए वस्तु चाहिए, मिष्टान स्वीट्स चाहिए, पेय मतलब पीने के लिए कुछ चाहिए, या विप्रकन्याम ब्राह्मण की कन्या चाहिए तो वो देता हूँ. फर्नीचर्ड हाउस उस जमाने से ये चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज हो रहा है ये. ग्रामम समृद्धम तुरगण गजा, हाथी चाहिए तो हाथी देता हूं मैं. रथम आपको रथ देता हूं आपको. तुरगण मीन्स हॉर्स चाहिए तो हॉर्स देता हूं. जो चाहिए
संप्रति इच्छा, जो भी आपका इच्छा है वो आप मांग लो। तो पहले आज के ज़माने का ब्राह्मण रहेगा, हाँ हाँ लिस्ट है मेरे पास, एकदम लिस्ट डाल देगा आगे। व्हाट्सअप करूँ तो व्हाट्सअप करता हूँ, रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा तुम। बट what did Bali Maharaj, what did Vaman Dev do? Very nicely, Vaman Dev did one thing. This is a way in which a Brahmana should behave. He first praised Bali Maharaj. वाह, क्या कुल से आप आते हो? क्या कुल है? हिरण्यकशिपु वाला कुल है। Yes, he is an asura. He is coming, but he didn't tell him, you are Prahlad Maharaj's son. He said, you are Hiranyakashipu's grandson, great grandson. तो क्या कुल है आपका? What a family lineage you are having, and such a fantastic, जहाँ पे कोई कुछ कमी नहीं है, दान में आप लोग जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, and so गलत भी नहीं बोला उसको. That's the specialty of God. And says, I know that even until now, no one taking birth in your family has been poor-minded or miserly. No one has refused to give charity to Brahmanas, nor after promising to give charity to anyone, failed to fulfill their promise. Mahamandev said, in your family, the great Hiranyakashipu was born, who came behind Vishnu. किसका नाम ले रहे हैं? विष्णु. And who is he? He himself is Vishnu. बोल रहा है यार, आपका परिवार में वो हिरण्यकशिपु था ना, विष्णु के पीछे भाग रहा था. और कभी हुआ ये बात? when हिरण्यकशिपु was in his peak, प्रहलाद पैदा नहीं हुआ था तभी, और तभी सभी देवताओं को भगा दिया. and then he went searching for विष्णु, and विष्णु कहीं मिले नहीं, तो ढूंढ रहा है. तो दिस श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट. यद्यतो हम तत्र असौ मृत्यु प्राण भृतांश्च एवः अतो हम अस्य हृदयं प्रवक्ष्यामि प्रागदृशः. व्हाट डज ही से? कि भाई जैसे मृत्यु मनुष्य के पीछे भागते रहता है, वी ऑल थिंक वो मरा ना, डोंट वरी, आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं. We all can be next. We don't know what will happen next moment, what to talk about few years later. We don't know what is going to happen next moment. तब he says, जैसे मृत्यु मनुष्य के पीछे भागती है, वैसे वो हिरण्यकशिपु विष्णु के पीछे भाग रहा था. और अतो अहम अस्य हृदयम, भगवान विष्णु ने बोला चलो मैं एक काम करता हूं, इसका हृदय में मैं घुस जाता हूं. प्रवक्ष्यामि प्रागदृशः. प्रागदृशः मतलब ये बाहर ढूंढेगा, अपने अंदर मुझे नहीं ढूंढेगा. तो मैं क्या करता हूं, हिरण्यकशिपु के हृदय में घुस जाता हूं. और ये ढूंढ ढूंढ के देखा, ओ भगवान विष्णु मर गए. हिरण्यकशिपु डिक्लेयर दैट आई एम नॉट एबल टू सी, बिकॉज एवरीवन, राक्षस वृत्ति मीन्स what is seeing, I believe that. And who are suras? They have faith. They have faith on Shastra, they have faith on Guru, and they have faith on God. Whereas asur ka matlab kya hai? What I see, I believe. I can't see Vishnu, so Vishnu is not existing. He must have died. मेरे डर से वो मर गया होगा. That is what he said. So he's telling, क्या कुल से आप आते हो? आपका कुल का क्या कहना? He's praising. So in the subtle body form, actually this happened in the 7th canto. When you read the sing, there this is not mentioned. Only in the 8th canto is mentioned that Lord Vishnu took the form, subtle form, and entered into the heart of Hiranyakashipu, and that is also mentioned specifically through his nostrils. It is specifically mentioned. It's not that it's like just something which you have to accept. He went through his nostrils into his heart. He will not, and he could, along with his breath. Unable to see him, Hiranyakashipu said, I have searched the entire universe and I could not find Vishnu, who has killed my brother. Therefore, he certainly must have gone to the place where no one returns. In other words, he must be now dead. So the Lord praised the entire family in this way, and then finally he said, Tasma tato mahim ishahda
Vrinayaham Varada Rishabha. This Varada Rishabha is a word used for the Lord also. Vrinayaham Varada Rishabha. Padani Trin Daitya Indriya. Samitani Padamama. What conditions he is putting, please understand. भगवान का एक एक शब्द, इसके लिए भगवत गीता का एक एक शब्द 1000 शब्दों के समान है. एक एक शब्द में कैचेस रहता है. one word is having a catch. He is saying तस्मात् ततो महिम ईषद. मैं महिम मतलब लैंड की इच्छा करता हूं. और वृणे हम वरद ऋषभ, उनका नाम बोल रहे हैं वरद ऋषभ, who is a personality who can give charity magnificently. जो मतलब खुलकर दान देने वाला व्यक्ति, बड़ा दानी व्यक्ति को वरद ऋषभ कहा जाता है. says आप वरद ऋषभ हो. and then what he says, पादानी त्रिन दैत्य इंद्रिय. सिर्फ 3 पद चाहिए मिले, 3 स्टेप्स, 3 फुट. पादानी त्रिन दैत्य इंद्रिय, दैत्यों के इंद्रिय आप इंद्र हो. पर लास्ट लाइन में क्या बोला उसने, समितानी पाद मम, मेरे पैर से मैं नापूंगा. ऐसा नहीं बोला कि भाई आपके पैर से दे दो. समितानी पाद मम. सो लॉर्ड इज वेरी वेरी क्लेवर. इमीडिएटली बलि महाराज से पहला हंसा. हु एम आई, किससे मांग रहे? आई एम द किंग ऑफ ऑल द 3 लोका का मैं राजा हूं, और मेरे सामने एक तो तू है इतना सा, हाँ टिंगणू सा, और उसमें योर हाइट इज शॉर्ट, मीन्स योर लेग्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी शॉर्ट. एंड ही सेज, बलि महाराज सेज, माम वाचो भी सम आराध्य लोकानाम एकम ईश्वरः. इस लोक में मैं अकेला ईश्वर हूं. आई एम द ओनली ईश्वर. और मुझे तेरा बात बहुत प्यारा लगा. मम वाचो भी सम आराध्य, मुझे आपका बात बहुत प्रिय लगा. पादानी त्रयम व्रते यो, पादानी त्रन, 3 पग मांग रहे. कैसा है वो? अबुद्धिमान. बुद्धू है तू, मांगना नहीं आता है. किसको बोल रहा है? भगवान को बोल रहा है. अबुद्धिमान द्वीप दासु सहम. एंड जो इस पूरा तू मांगना है तो पूरा आइलैंड मांग. जो आइलैंड मतलब यहां पे किस चीज को आइलैंड बोला गया है? देयर आर 7 द्वीप्स एंड वर्षस. जम्बू द्वीप, इला वर्ष द्वीप, ऐसे द्वीप, अलग अलग द्वीप है. एक द्वीप में दे सकता हूं. आई कैन गिव यू 1 द्वीप एंड यू आर आस्किंग फॉर 3 फुट. यू आर अबुद्धिमान. तू बुद्धिमान नहीं है. Oh small boy, one who approaches me to beg something, one should ask for anything more and anywhere. Therefore, if you wish, you may ask for as much land as you will suffice to maintain according to your need. As much land you want, you ask. तब भगवान कुछ बातें बलि महाराज को कहते हैं. कहते हैं तो बलि महाराज के लिए, बट इट इज एक्चुअली फॉर अस. यावत विषयान प्रेष्ठ त्रैलोक्यम अजितेन्द्रिय न साक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूर्यतम नृपः. फर्स्ट एडवाइस ही गिव्स, यावत विषयान प्रेष्ठ. लेट मी रीड द ट्रांसलेशन by Srila Prabhupada. The personality of Godhead said, my dear king, even the entirety of whatever may within the 3 worlds to satisfy one's senses cannot satisfy a person whose senses are uncontrolled. Now let's analyze this sloka very importantly. यावतो विषयान प्रेष्टः. विषयान का मतलब क्या है? विषय वस्तु. विषय वस्तु का अर्थ क्या है? विषय means an object which will fulfill one of your senses. जैसे आपको सामने एक बड़ा सा रसगुल्ला दिखा, अब इससे आपकी आंखें खुश होंगी, आपके नाक खुश होगा, आपके कान खुश होंगे, या आपका जीभा खुश होगा?
एक बढ़िया सा क्रीम रखा है, तो उससे आप चाटोगे या स्किन पे लगाओगे, बिकॉज वी गॉट 5 सेंसेस, राइट? Basically, you got 5 senses. So any one of the senses will be fulfilled by one of the items. It's a tasty food. You like some nice, beautiful picture. Can you go and lick it? No. You're going to see it. That is going to fulfill your eyes. The nice music. What is going to fulfill? Your ears. So he says, Lord is saying, Yavat Vishyan Prishta. त्रैलोक्यम अजितेंद्रिय, अगर तीनों लोगों के सारे इंद्रिय वस्तु लाके दे दिया आपके पास, सारे इंद्रिय वस्तु, देखना, सुनना, खाना, स्पर्श करना, सारे वस्तु तीनों लोगों का मैं लाके दे दूं कोई, मगर वो आदमी कैसे है? अजितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पे अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया. फॉर दैट पर्सन बोले न साक्नुवंती ते सर्वे प्रतिपूर्यतम नपः नृपः. नृपः मतलब ओ राजा, उसको ये सारे चीज मिलने के बाद भी पूरित नहीं होगा. इट विल नॉट बी सेटिस्फाइंग दैट पर्सन. ही वांट्स मोर एंड मोर. दैट इज व्हाई वी गॉट दिल मांगे. सो नाउ यू ऑल बिकम अजितेंद्रिय. कॉल यू आर टू बिकम इज अजितेंद्रिय. नो मोर. दिल मांगे मोर करते करते कंपनी का फायदा हो रहा है, आपका कहाँ फायदा हो रहा है? योर मनी, योर स्पेंडिंग मनी. सो बेस्ट इज यू कंट्रोल योर सेंसेस. एंड दिस इज द फर्स्ट एडवाइस व्हाट लॉर्ड इज सेइंग. देन ही सेज यदृचा उपपानेन संतुष्टो वर्तते सुखम न असंतुष्टो त्रिभैर लोकेर अजितात्मा उपसादितेर. ही सेज यदर्चा उपपाने ने, अपने आप जो विषय आता है अपने पास, उससे आप खुश रहो. क्यों? उससे आप संतुष्ट तो वर्तते सुखम, उससे जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वो सुखी है. नो, वी ऑल वांट टू बिकम हैप्पी, एंड टू बिकम हैप्पी वी आर ट्राइंग टू गो एंड सर्च इट आउटसाइड. Now it's Christmas Eve, everyone is moving around here and there searching for happiness, and then Sunday evening they will realize they did not get happiness. So again next Saturday again they will go out. भाई 31st नाइट में जाके मैं ढूंढता हूँ will I get some happiness, and वो भी नहीं मिला तो फिर जनवरी में जाके कहीं और. You know, we are, every occasion or every festival is only meant for searching for more happiness. And the best joke is, in India, people are celebrating less of Diwali and more of Christmas. And the only difference is, in European countries, in abroad countries, most of the Catholics are celebrating Christmas in the church. And here, they are celebrating in the pubs and bars. Now, I don't know. ठीक से कॉपी करना भी नहीं आता. That's all I can say. We are habituated to copy all foreign systems, but they celebrate it in the church. But we, on Diwali day also, we are busy ordering from Amazon. जिस दिवाली घर में खुशियां ले आओ ना. रामचंद्र जी का आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? मंदिर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए क्या फर्क पड़ता है? And vice versa, when it comes to any other festival also, only means any happiness means what we know is providing more to our senses is happiness. But what is Lord saying? यदृचा उपपाने ने संतुष्टो वर्तते सुखम. जो संतुष्ट रहेगा, one who will be happy, who will be satisfied, he will be happy. Not one. Then he says ना संतुष्टो त्रिभैर लोकेर अजित आत्मा उपसादितेर. अगर अजित आत्मा है तो वो कभी खुश नहीं रह सकता. असंतुष्ट और त्रिभैर लोकेर, तीनों लोकों में वो असंतुष्ट रहेगा. क्यों? उसके अंदर वो शांति नहीं आएगी, बिकॉज वो अजित आत्मा है, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. One has to learn to control his senses. Unless and until one doesn't control his senses, it's going to be very, very difficult. Then first, what did Bali Maharaj say? Sorry, Vamandev say? First he has said is about happiness. Second,
Very important thing he gives. Very important notation. And that is Pumso ayam samsutre hetur. असंतुष्टो अर्थ कामयो. पुंसो अयम संस्मृति हेतु असंतुष्टो अर्थ कामयो. यदृचा उपपानेने संतुष्टो मुक्ते स्मृतः. व्हाट डज दिस मीन? क्लियरली सेज मुक्ति कैसा पाना है और संसार में बार बार जन्म क्यों लेना पड़ रहा है, इसका कारण भी भगवान बता रहे हैं सर. पहला चीज क्या बोल रहे हैं? पुंसान अयम संस्मृति हेतु. मनुष्य क्यों बार बार जन्म ले रहा है? संस्मृति में बार बार जन्म क्यों ले रहा है? बिकॉज असंतुष्टो अर्थ कामयो. जितना भी अर्थ मतलब पैसा हो, नॉट जस्ट मनी. अर्थ कैन रेफर टू हाउस, कैन रेफर टू गाड़ी, बंगला, ऑल मटेरियल थिंग. अर्थ काम. अर्थ मतलब जो आपके पास आया है, और काम मतलब जो अभी तक आपके पास मिला नहीं. You have got something, but you want something more. इस चक्कर में क्या हो रहा है? मनुष्य बार बार जन्म ले रहा है. एंड देन यदृचा उपपाने ने संतुष्टो मुक्ते स्मृतः. जो खुश है अपने आप, वॉट एवर कम्स इट्स ओन अकॉर्ड, वन इज हैप्पी. दैट फेलो इज कंसिडर्ड टू बी लिविंगली इन ए liberated state, because he's satisfied. So even you don't have to, one doesn't have to leave this body and go to the spiritual world to get liberated. Living also you can get liberated. He's saying mukte smrita is considered to be. Now third, very important, and this doesn't apply only to brahmanas, though he is telling over here only for brahmanas, but is for everyone. Edricha labha tushtasya. Again, edricha. The word edricha is very important. What comes of its own accord. Edricha labha. अपने आप जो फायदा हो गया. तुष्टस्य. जिससे वो तुष्टि है. तुष्टि मतलब satisfied है. तेजो विप्रस्य वर्धते. विप्र मतलब ब्राह्मण. ब्राह्मण का तेज उससे वर्धते मतलब इट इंक्रीज, बढ़ता है. उसका तेज और बढ़ता है. कई बार आप कई साधुओं को देखोगे, they may not be wearing a diamond necklace or a diamond ring, and they may not be having some great dresses or something, but still उनके अंदर एक तेज दिखेगा आपको. तो what is that? यदिर्चा लाभ तुष्टस्य ब्रह्म तेज, विप्र तेजो विप्रस्य वर्धते. देन तत् प्रशमयति असंतुष्टो. जो असंतुष्ट व्यक्ति है उसका तेज घट जाता है. दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेइंग कि उसका तेज घट जाता है. कैसे? जैसे अंबसा इव सुषुक्षणेर. जैसे आग में पानी गिरता है, वैसे आग है, तेज है, ब्राह्मण का तेज होगा, पर उसमें अगर पानी गिर जाए तो तेज बुझ जाएगा. उसी तरह है असंतुष्ट व्यक्ति का, ब्राह्मण का मतलब असंतुष्ट व्यक्ति का तेज कभी ऊपर नहीं आएगा. whereas a person who is satisfied, he will be always having a higher tej. Therefore, O king, I ask for only 3 pace of land. By such a gift, I shall be very pleased, for the way of happiness is to be fully satisfied to receive that which is absolutely needed. तो व्यक्ति को जो चीज की जरूरत है वही मांगना चाहिए. उससे अधिक मांगना कोई फायदे का काम नहीं है. बट यहां पे एट दिस पॉइंट शुक्राचार्य केम टू नो, इतना ऑफर करने के बाद भी वो ले क्यों नहीं रहा है. He understood that this fellow is none other than Vishnu. Immediately he came to a very important point that he wanted to advise Bali Maharaj. So immediately what did he say? Eshate sthanam aishwaryam shriyam tejo yasa shrutam dasyati adichhe sakraya maya manavako
हरि ही। दो काम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहे हैं। सी एषते स्थानम ऐश्वर्यम, तुम्हारा जो स्थान है, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, श्रियम तेजो यश श्रुताम, चार चीज और है। श्रिय, श्री मतलब पैसा, तेजो आपका तेज, यश आपका विक्ट्री, एंड श्रुताम जो आपने सुना था और आपका पढ़ाई। दास्यति अच्छति साक्रेय, ये सब चला जाएगा। क्यों? ये आपका दुश्मन आया हुआ है, योर एनिमी हैज कम, एंड व्हाट इज दैट? माया मानव को हरि ही, माया करके मतलब फॉल्सली, ही इज कमिंग, डिसीटली इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ मानवक, like a human form, like a saying, he is none other than hari hi, hari matlab Vishnu, and Vishnu is your chaste enemy. He will occupy all the three worlds in 3 steps by promising you you have done a great mistake. Now what is the trick you get from this? See, when you all read Bhagavatam, please get the knack of reading Bhagavatam. What did he say? He will occupy the 3 worlds in 3 steps. But did he occupy 3 steps? See, unka matlab, here you understand Sukracharya's thinking mentality. It is said, what is the difference between sadhu and purohit? साधु और पुरोहित में क्या अंतर है? Sadhu talks about the benefit of everyone, and Purohit talks about the benefit of only his Jatman. यजमान का हित में, one who talks in the benefit of his yajman, that is whoever has hired him for any puja or anything, he is a purohit. So what has happened? He has fallen from the place of a guru. From the place of a guru, he has fallen to a place of a पुरोहित. यजमान का फायदा, क्योंकि यजमान का फायदे में ही उसका फायदा है। पर साधु क्या सोचता है या गुरु क्या सोचता है? I want to see the benefit of the soul. I am not interested in seeing the benefit of the material benefits or material body. Suppose you may have a nice house, nice car, nice factory, blah 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 blah. That is only for the body, not for the soul. But that is the difference. पुरोहित means जो आपका हित का सोचता है, बट कौन सा हित? यजमान का हित. एंड द सेम पर्सन जब आप वो दूसरे के घर पे चला जाएगा तो उसका हित का सोचेगा. तो किसका हित का कर रहा है? एंड इट्स ऑल एक्सटर्नल, नथिंग इंटरनल. So after giving everything, Lord Vishnu, you will have no means of livelihood. How shall you live? How will you will certainly be unable to fulfill your promise. And I think because of this inability, you will reside eternally in hell. Another important clause from Manu Samhita is telling, जब तुम दान दे दोगे तुम्हारा पास से सब चला जाएगा, और अगर नहीं दे पाए, if you are not able, because you are promised, if you don't give, what will happen to you? You will have to reside in hell. That is why दान देने का वादा करके संकल्प मात्र करने से अगर ना पूरा करें तो आपको नरक जाना पड़ेगा. You will have to go to hell. This is what Manu Samhita says. One might argue that since you have already promised, how can I refuse? Very important point. मैंने already promise कर दिया हूं, तो how can I refuse? Just 10 minutes more. I'm taking some important points and then I'll wind up the story. Okay. So how can he say no? Oh. जिगर देखो. Oh, okay.
अप एंड डाउन स्टेप्स है ना, हाँ. ओके, नो प्रॉब्लम, बी केयरफुल. सो यहाँ पे बली महाराज इज आस्किंग, ओके रिलैक्स रिलैक्स, यहाँ पे बली महाराज इज आस्किंग शुक्राचार्य, मैंने तो ऑलरेडी प्रॉमिस किया, नाउ हाउ विल आई फॉल बिकम फॉल्स, नो, मैं झूठा पड़ जाऊंगा, मैंने वादा किया और वादा से मैं मुकर जाऊं तो झूठा पड़ जाता है. दैट टाइम बली महाराज, सॉरी, शुक्राचार्य says very important statement, and this is applicable to you but only in true terms, huh? Don't, इसके आड़े आप लोग मत करना, पहले I have to give this warning before I explain this verse. He says Sri Shu, first and foremost he starts with Sri Shu नर्म विवाहे च, इन जगहों पे आप झूठ बोल सकते हो. पहला चीज स्त्री शु, स्त्री शु का मतलब व्हेन यू वांट टू प्रेज अ वुमन. अब इसे समझ जाना, वेन एवर यू रिसीव प्रेज इट इज बोनाफाइड इन द शास्त्र. सो स्त्री शु, अगर आपको किसी औरत का, भले ही वो डायन दिखती हो, नहीं आप बड़ी बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बोलना भी पड़ा तो भी आपको वो झूठ का पाप नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर मेकिंग हर फील हैप्पी. ओके, फर्स्ट इज स्त्री शु, सेकेंड इज नर्म विवाहे, अगर विवाह होता होता कुछ झूठ बोल भी दिया ताकि वो विवाह नहीं टूटे, द मैरिज शुड नॉट ब्रेक, द मैरिज इज हैपनिंग. नो, कहते ना 100 झूठ कह के भी एक शादी कर लो, इट्स नॉट सिंफुल. व्हाई? बिकॉज गेट अ गर्ल मैरिड टू अ बॉय इज अ बिग थिंग, and just for small things, I mean that doesn't mean, I mean please don't misinterpret all this what is given in the shastra, but थोड़ा बहुत झूठ बोल के भी अगर शादी टूटने की कगार में है तो झूठ बोलना भी गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग. वृत्ति अर्थे, वृत्ति अर्थे मीन्स दुकान वाला आप कभी जाओ, मैडम आपसे कुछ कमा नहीं रहा हूं, मैडम आपसे मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, बस मेरा कॉस्ट में दे रहा हूं. क्यों भाई, कौन क्या हो गया तेरे घर पे, कौन मर गया, मेरे को इतना दान में दे रहा है. सो इट इज ऑल, बट दैट्स व्हाई प्रभुपाद आल्सो सेज इन बिजनेस, दुकान वाला, अगर दुकान वाला कोई झूठ बोलता है, इट इज नॉट अ सिन, इसका पाप नहीं लगेगा. तो वृत्ति अर्थे प्राण संकटे, अगर किसी का प्राण संकट में हो तभी वो झूठ बोल देगा, मैं पहचानता नहीं हूं, पहचानना मत, चलेगा, नो प्रॉब्लम. तो प्राण संकटे. गो ब्राह्मण अर्थे, कभी गाय का हत्या होने वाला हो या किसी ब्राह्मण का कुछ तकलीफ आने वाला हो, एनी कैलामिटी इज कमिंग ऑन काउ और ऑन काउस, गो ब्राह्मण अर्थे, उनको बचाने के लिए इफ यू हैव टू टेल अ लाई, नॉट अ प्रॉब्लम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिंसाया, व्हेन देयर इज सम attempt of murder or something, उस टाइम पे भी if you can, to stop violence also you can tell a lie. Then what did he say? Na anritam syad jugupshitam, he says in conditions पे you don't get sin. तो ये इसके हिसाब से now your प्राण is in संकटा. से सोच लो यहाँ पे उसको क्या बोल रहा है वो, why he is telling this, he is telling shastra, he is not talking out of the book, he is talking from the books only. What he is saying is, see, here it is prana sankate, your prana is in sankata, you lose everything, so it's better you say no to Vaman Dev. But here's very important thing we have to learn. He did not immediately react. We generally react to the situation. जैसे कोई बुला तो तुरंत जवाब देते हैं. No, Bali Maharaj was silent, waited for some time, and then he said, see, I don't fear of losing all the money, all the wealth, all the power and position I'm losing, but what I fear is I don't want to cheat a Brahmana. I don't want to get the curse of a Brahmana, especially towards a Brahmana, and I should not be called as a cheater. मतलब I should not be called, मैं जबान का पक्का नहीं हूँ. I'm not a man of
ट्रू वर्ड्स, ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए. So why not please Vaman Dev? See, this is a very nice thought process of Bali Maharaj. Says, why not please Vaman Dev with the riches one is destined to lose at death? जा जाके क्या लेके जाएगा? वो धन लेके जाएगा. ऐसे भी मृत्यु के वक्त वो पैसे मेरे छूटने वाला ही है मेरे हाथ से, पर कम से कम ब्राह्मण को दूंगा तो मुझसे कम से कम मेरा नाम तो नहीं बिगड़ेगा. So after telling all this, thereafter, this is very important point. At this point, Sukracharya becomes angry and he curses Bali Maharaj. And इसी के लिए तो हम लोग क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी यहीं पे था ना. That time बृहस्पति had told, जिस दिन वो अपमान करेगा उसका उस दिन स अनुमोदित विनक्ष्यति, पूरा उसका विनाश हो जाएगा. तो he is waiting for him to insult, and finally he is going to insult him. But how he is going to insult? Very important. Being inspired by the Supreme Personality of Godhead, he cursed Bali Maharaj. So what? Remember one thing: if any sadhu curses, कई हम लोग शास्त्र में कई बार पढ़ते हैं कि साधु ने श्राप दे दिया. That is by inspiration of the Lord, and that is for the betterment of the person, उसके फायदे के लिए. Okay. So दृढ़म पंडिता मान्य अजस, तू दृढ़ है, अपने आप को पंडिता मान्यता है, पंडित मानता है अपने आप को. यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ पंडिता. स्तब्ध अस्मात् उपेक्षया, यू हैव इंसल्टेड मी एंड यू आर स्तब्ध. स्तब्ध मतलब यू आर डम, यू आर बिहेविंग लाइक अ डम मैन. मग मग मत शासन अतिगो यस्त्वाम, यू आर शासन अतिगो मतलब यू आर क्रॉसिंग ओवर माय words and on my directions. And then achirat bhrashyasya sriyat. Achirat matlab bahut jald. Chirat means late, not very late. Very soon you will fall down from shreya. Shreya means from all your opulences, money, everything, you will fall down. Immediately he gives him the curse. Even after being cursed in that way by the spiritual master, Bali Maharaj was determined to give him the charity, which was of 3 pug. Immediately tad vamanam rupam avrudha adbudham, immediately Vamandev starts increasing his size. So here my question is, has Vamandev cheated Bali Maharaj? Come on, fast. No. Manipulated. Agreed? Who said manipulated? Okay, very good. Who else? Who else would like to say? अरे सीधी बात है ना, चीटिंग है ना, मैनिपुलेट किया ना, चीटिंग किया ना. यू अग्री? ही चीटेड. Vamandev cheated Bali Maharaj. He started expanding now, and expanded so much that all the holes in the universe got blocked up, like jumbo, like unimaginable. In all directions he expanded. He expanded so much that with 2 legs he has just covered the entire universe. The entire universe is covered in 2 legs. एक अणु रखने के लिए जगह नहीं छोड़ा उसने. So is it justified? Like Vamandev told, he will take the 3 steps. No? So what if at the end, even after extended himself? But Mataji, if someone comes to you for begging and he shows only this small bowl, इसमें जितना आएगा उतना आटा लूंगा, and when you go to give him मालूम पड़ा पूरा गोनी बैग है. तो क्या होगा? आप क्या, how do you react? आपने तो खाली डब्बा बोला है. हाँ, मैं वो इतना छोटा डब्बा आपने दिखाया, बर्तन दिखाया, बाद में मालूम पड़ा पूरा. when you going to give him the आटा, मालूम पड़ा पूरा गोनी बैग निकला. तो is he cheating or not cheating? Yes, Dr. Saab, what do you feel? Is cheating? Cheating. Okay. Jigar, cheating, not cheating? Fast. Cheating. Okay. Rajesh, cheating? No cheating. Then what is it? That is his Swarupa, real Swarupa. No.
But you showing one Surupa and taking advantage. How is it? Yes, हाँ, अरे आपको तो हमेशा डाउट रहता है. चंद्रकांत प्रभु भूलिए, चीटिंग है. ओके, याद रखना, Lord does everything within the rules and regulations. एक simple example देता हूँ. Suppose Shiv gets married to one girl. My favorite guinea pigs. So Shiv gets married to one girl. And the day he gets married, that girl is very slim and thin. And after a few years, because of all the love and care he takes care of her, she becomes fat. Okay? She becomes fat. Now, he's not able to identify, she becomes so fat. Okay? So he remembers one thing. मैंने उसके लिए कमर पट्टा खरीदा. वो कमर पट्टा अगर जिसको फिट होता है वो मेरी पत्नी है. Okay? He tries to fit that, it doesn't fit. So would he say, no, you are not my wife now because you are not fitting inside that kamar patta or that dress, whatever dress. Let's say he must have bought some new dress for his wife. Okay, and after 4 years his wife becomes big and fat and stout, and now that the dress doesn't fit her. So does that mean he is not his wife? Acharya say, just because of the love and affection what Bali Maharaj expressed to him, he expanded. Like, it's the same wife. It's the same wife. When you get married, that day she may be slim and trim, and after a couple of years she may be fat like a pumpkin. And then at that time, would you say, no, now you are not the wife because I see the photograph. So that time when I got married, your weight was X, and now it is X plus X plus X plus X plus X. Now what will I do with you? You are not the same personality. So it's the same Vaman Dev. जैसे शादी के बाद एक लड़की मोटी हो जाए या लड़का मोटा हो जाए, and this applies vice versa also. It's not that one-sided. I'm just giving an example. We have to understand this. Similarly, one who is taking care of someone, or who is lovingly giving something, by his giving he becomes, by his taking he becomes so enlarged. So Bali Maharaj was not cheated by Vaman Dev. वामन देव उसका प्यार से, जैसे पति का प्यार से पत्नी और पत्नी के प्यार से पति, तो they still remain, the person remains the same. There is no change. Similarly, one has to understand this. Very important. Many people say, अरे ये तो cheating हो गया, ये हो गया, वो हो गया. No, but Vaman Dev never cheated. Okay, let me fast forward everything, otherwise few of you may fall down unconscious. And the second step, Lord covered all this thing. And Tabhi, the famous incident of how Gangaji came, Lord punctured the universal egg, the universal shell with this toe. And Brahmaloka is so effulgent, and that loses its effulgence because of the tip toe of Vaman Dev. उसमें से इतना effulgence आता है कि the whole loka was looking dull. And that time Brahmaji with this Kamandalu washes the feet of Lord Vaman Dev, and that was what the water we get as Ganges, which flows into all the three worlds and purifies all the three worlds. And then immediately the same Jamban story also comes here. Jamban tries to do 21 times the parikrama of that Lord Vaman Dev, and that is mentioned in Ramayana also. It comes in Ramayana also. It's very important. I will not go into the details of that. Okay. He also joined the ceremony of celebration. And finally, यहाँ पे, when the supporters of Bali saw that their master is getting cheated, immediately there was a war, fight. दोनों के बीच में पार्टी में झगड़ा, and this time all the asuras were getting killed. Immediately Bali said, stop it, time is not favoring us. And immediately here
Garuda tied him with Varunapash, the ropes of snakes of Varuna. With that, he tied him. And there, Vamandev says, Padani Trindaityani Bhumir Mahyam Taya Asuraha Vabhyam Kranta Mahi Sarve Tritiyam Upakalpaya. दो में द्वितीयाम क्रांत मही सर्वे, जितना भी जमीन था, जितना भी जगह था, आई हैव कवर्ड. तृतीयम उपकल्पये. And then he says, now since you have done something, now I'm going fast, I'm not reading the shlokas. He says, since you have told a lie, your this thing is not fulfilled, please enter your hellish planets. And not only that, along with that, he tells him, that was also the wish of your spiritual master. Go there. That time, Bali Maharaj gives a very nice reply. This is something which we all should really understand. Yadi uttama shloke bhavan ime iritam, mama iritam. He says, यदि अगर उत्तम श्लोक हे भगवान भगवान आपको लगता है मम ईरितम, माय प्रॉमिस, वाचो व्यालिकम, व्यालिकम मतलब झूठा पड़ रहा है, इट इज गोइंग फॉल्स. सुरवर्य मान्यते, सुरवर्य लॉर्ड का और एक रेफरेंस है सुरवर्य. सुरवर्य मतलब सुरों का राजा. करोमि ऋतम, इसको मैं सही कर दूंगा. करोमि ऋतम तन्ना भवेत प्रलंभमम पद्मम तृतीयम कुरु शीर्षया न ऋजम. ही सेज, जो तीसरा पैर है ना मेरे सिर पे रख. वाई? इट इज सेड, दान से बड़ा दानी होता है. दान बड़ी बात है, बट दान से बड़ा दानी होता है. So I am still there. Please keep it on my head. So if you feel I have done a false thing, I will rectify it by saying something, by doing it correctly. I will rectify it by your allowing you to keep your leg on my head. I do not fear being deprived of all the possessions, living the hellish life, being arrested for poverty by the ropes of Varuna, or being punished by you, as I fear defamation. I don't want मेरा इज्जत बिगड़ना नहीं चाहिए, इसके लिए I don't mind. And there he says, only by providence I have been forced under your lotus feet and deprived of all my opulence. Because of your illusion, because of the illusion created by temporary opulence, people in general who live under material conditions, facing accidental death at every moment, do not understand that this life is temporary. Only by your providence I have been saved from that condition. यहाँ पे बली महाराज ये भी कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति इसमें अंधा हो जाता है. अपना धन, अपना ऐश्वर्य, अपना नाम, ये सब मिलने के बाद, when one is full of name, money, fame, opulence, he becomes mad. He doesn't care for anything. He thinks that is life. Who is God? I don't need anyone. I am the boss. At that moment, he thinks everything is, I am at the peak of my life. But least does it understand that life is just a fraction of time, and at the end it is going to take place. And what does he say? We are meeting death every second. How is it? Every second we are dying? Yes, every second we are going closer towards death. Let's say a person who is born today and he is going to die after 80 years. Every minute his graph is moving closer towards that end time. स्लोली एक एक दिन कट रहा है. जब एक दिन यहां से सब सूर्यास्त होता है, वाह सूर्यास्त अच्छा हो गया, एक दिन कट गया, आयु में से एक जीवन कट गया. लीस्ट टू द पीपल अंडरस्टैंड दैट इज द प्रॉब्लम. Prahlad Maharaj appeared there and he said, you have done a big favor
by taking away everything so that he will comes into reality. Please understand, this is the last verse which I am going to discuss right now, and then of course that's this, almost the story is over now. 3-4 shlokas will be over, but very important turn of the what we learn with the crux of this. श्री भगवान वाचा, ब्रह्मा जी ने आके बोला अरे इसको छोड़ दो, बस हो गया, बहुत अत्याचार हो गया इसके ऊपर. तो ब्रह्मा यम अनुग्रहेणाम तद विशो विदुनोयम अहम यन मदन पुरुषः स्तब्धो लोकामा च मन्यते. He says, my dear Brahma, because of the material opulence, a foolish person becomes dull-witted and mad. He has no respect for anyone within the 3 worlds. पैसे के घमंड में कोई किसी को रेस्पेक्ट नहीं करता है. And defies my authority also. To such person, Mam anugrahanimi. What does this mean? To such a person I show special favor by taking away all his possessions. तो अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो क्या करेंगे भगवान? पहले आपसे, कितने लोग जाना चाहते हैं अभी बाहर? Don't worry, you are not going to be specially favored like that. This is only for those who consider the money and opulence for themselves. When you think everything is God's, सब भगवान का दिया हुआ है और एंड में मुझे भगवान को ही देना है, then you are not the enjoyer. Whereas general people, what do they think? ये मेरे भोगने की चीज है. But actually भोगता कौन है? भगवान. He is actual enjoyer, but we feel we are the real enjoyers. So finally, then Lord says, don't worry. All I have arranged is 2 things, he says. Although bereft of all the richness, fallen from the original position, defeated and arrested by his enemies, rebuked and deserted by his relatives and friends, although suffering pain of being bound, and although rebuked and cursed by his spiritual master, Bali Maharaj, being fixed in his own vows, did not give up his truthfulness. It is certainly that pretension that I spoke about religious principles, but he has not given up the religious principles in true words. He says, इतना सब होने के बावजूद भी उसने अपना सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा. क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ? गुरु का झगड़ा हो गया, अपना लोगों का विरुद्ध हो गया, वरुण पाश से बांधा गया, सब कुछ रिक्त हो गया, उसके बाद से जितना भी श्रेय था सब रिक्त हो गया. इवन आफ्टर दैट ऑल्सो ही डिड नॉट लीव हिज ट्रूथफुलनेस. एंड देन ही सेज, until Bali Maharaj receives the position of the king, now he is kept as reserve. He wanted to become an Indra, right? उसके लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, उसको वापस इंद्र बनाएगा. ये मनवंतर होने के बाद नेक्स्ट मनवंतर में नेक्स्ट इंद्र विल बी बलि महाराज. And he says, until Bali Maharaj receives the position of the king of heaven, he shall live on this planet Sutal, which is made by Vishwakarma according to my orders, because it is specially protected by me. It is free for mental and body. It is free from mental and bodily miseries, fatigue, dizziness, defeat from all disturbances. Bali Maharaj, you may go and live there peacefully. Please, this verse I'll just read out. Tavat sutalam adyascham Vishwakarma vinirmitaha yad adyo vyadyascha kalmastantra prabhavam na upasarga vinashattam sambhavanti mam ikshaya. This last word is very important. He says, मैंने तेरे लिए एक स्पेशल सुतल लोक बनाया है. किससे? विश्वकर्मा विनिर्मितः, विश्वकर्मा से स्पेशली मेड. एंड इस श्लोक में ना यद आद्य न व्याध्यश्च, ना कोई व्याधि होगा, ना कोई मेंटल टेंशन होगा. नो मेंटल डिस्ट्रेस, नो व्याधि, नो कोरोना, नथिंग विल बी देयर. कल्मस्तंत्र प्रभावाम, देयर वोंट बी एनी मेंटल डिजीनेस और कलमश बोलते हैं ना, कलबश नहीं रहेगा. तंत्र डिजीनेस, हम लेजीनेस नहीं रहेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा. न उपसर्ग निवासम, जो वहां निवास करेंगे, इट वाज नॉट दैट वो बेचारा पूरा सूतर लोक में अकेला बैठा है. मेनी पीपल हैव, पूरा लोक में अकेला क्या करेगा? डोंट वरी, वहां के निवास करने वाले लोगों के अंदर भी कोई भी
उपसर्ग मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नो सुनामी, नो कोल्ड वेव, नथिंग विल बी देयर. एंड लास्ट, संभवंती माम इक्षया, मैं तेरे पे नजर रखूंगा. मेनी पीपल से, हाँ बलि महाराज को सुतल लोक दे दिया एंड भगवान वहां का वॉचमैन बन गया. He did not say that. Nowhere in Bhagavatam it is said that he became the watchman. What did he say? I will be seeing you. And next verse he says, you will also be able to see me. So that means what? In the building you keep on watching your watchman or the watchman keeps on seeing you. He is there to guard you. What does that mean? Lord is your well-wisher and is going to take care of you. So finally he orders him to go to Sutalok, and then from there he is going to become the final next Indra, the next thing. And thus the demigods all reigned happily and they lived happily ever after. Okay, that's what the ending of a movie always ends. So then the demigods took over the thing, and all the asuras went into hiding into the hellish lower planets. Okay, with this I would like to end today's class. By chance, if anybody has got any doubts, questions can ask.